So we were discussing about the freeze drying. So what is freeze drying? Freeze drying में क्या होता है? So freeze drying is also known as lyophilization. Okay, the process of freeze drying is also known as lyophilization. Means in this system, the system is made solvent loving by removing the solvent. मतलब यहाँ पे जो पाउडर है, वो उसमें से वाटर रिमूव किया जाएगा. बाद में जो पाउडर बनता है, that is a hygroscopic. So drying is done by keeping the material below the triple point of water. ठीक है. So drying is done by subjecting the material below its triple point of water. वो इसमें वर्किंग में देखा था प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट. पहले जो भी ये मटेरियल आपका ड्राई करने का है, तो इनिशियली यू हैव टू remove the moisture as much as you can by using different process like tray drying by desiccation. The material is frozen in a cold shells. ठीक है. टेम्परेचर जहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे रखना है उसको. उसमें उसमें जो भी क्या होगा, उसमें जो भी आपके पाउडर में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फ्रीज हो जाएगा, आइस बन जाएगा. नाउ सेकेंडरी ड्राइंग. So now primary drying. So in this case, whatever frozen water is there in your powder, that will be sublimed, or that is under sublimation. So ice under the vacuum temperature. Okay, so that will be subject to a sublimation by keeping the temperature and critical temperature and pressure condition. तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो कंडीशन होता है 0.0098 डिग्री सेल्सियस and 4.58 mm of G. That is a triple point of water, and you have to keep this temperature. And at this temperature, whatever ice is there, or whatever water is there in your powder, that will be whatever ice मतलब जो भी वाटर है ऑलरेडी जो फ्रीज हो चुका है आपका, so that ice water will be converted into water vapors. Okay, so that is below the triple point. And what is triple point of water? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? वाटर का कंडीशन क्या है? 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड 4.58 mm ऑफ G. इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर, तभी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आ जाएगा. मतलब ये टेम्परेचर पे, ये प्रेशर पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है. द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच वाटर एग्जिस्ट इन द three phases at equilibrium, that is solid, liquid and gases, that is known as the triple point of water. The temperature and pressure at which water exists in a three phases in equilibrium, okay, is solid, liquid and gaseous phase will be in equilibrium at this temperature and pressure, and this is known as the triple point of water. At this triple point, the solid can be directly converted into vapors, that is known as the eutic point. Now second ड्राइंग में क्या करना है आपको? जो रेसिडुअल मॉइस्चर है इसमें बचा है उसको भी रिमूव करना है by applying the vacuum and increasing the temperature. We have seen this. Oh, you can see here triple point of water. ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है. टेम्परेचर आएगा आपका 0.0098 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर आएगा आपका 4.58 torr. At this point, the water will be in an equilibrium. All the phases of water, solid, liquid, and gases. All these three phases of water will be in equilibrium. Above this temperature जैसे बढ़ेगा either solid or liquid. So conversion of solid, देखो यहाँ पे सिर्फ solid है ये part जो red color में है. Solid will be converted to liquid by melting, and liquid will be converted into solid by freezing. Now liquid will be converted to gases by vaporization. Gases will be converted into liquid by condensation. At the triple point of water, a solid can be directly converted into liquid. A solid can be directly converted to gases without converting into liquid. यहाँ पे जो आइस है आपका वाटर का डायरेक्टली वेपर बन जाएगा ये ट्रिपल पॉइंट के ऊपर, इसके बिलो द ट्रिपल पॉइंट you can sublime your ice into gas, or you can convert gas or water vapors directly into solid below the triple point. ठीक है. ये नॉर्मली सॉलिड का जो गैस है उसको हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और जो लिक्विड है उसको फ्रीज करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, और लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपराइज हो जाएगा, और उसको कंडेंस करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा. लेकिन बिलो द ट्रिपल पॉइंट क्या होता है कि आइस विल बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू वेपर बाय सब्लिमेशन, एंड आइस कैन बी कन्वर्टेड टू डायरेक्टली वेपर्स कैन बी कन्वर्टेड टू डायरेक्टली ice by deposition, and that is the principle involved in the freeze drying. This point is known as the triple point of water. Temperature, pressure, this is how the
योर फ्रीज ड्राइंग विल बी देयर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक चेम्बर रहेगा आपका, ठीक है, एक चेम्बर रहेगा आपका जहाँ पे मटेरियल वगैरह आपका रहेगा, चेम्बर रहेगा, यहाँ पे आपने मटेरियल रखा है, जो आपका मटेरियल है, शेल्फ शेल्फ होते हैं, मतलब एक आपके रेफ्रिजरेटर में जैसे होता है ना शेल्फ, तो वैसे शेल्फ रहेंगे। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रखा है, आपको जो फ्रीज है, तो फ्रीज में मतलब उस वाटर का आइस बन चुका है। बाद में क्या करना है आपको, तो वैक्यूम और टेम्परेचर ये ट्रिपल पॉइंट पे लेके जाना है। इसमें का जो आइस है वो सब्लिमेशन हो जाएगा यहाँ पे, जो सब्लिमेशन जो वेपर्स है वो सब वेपर्स कैरी किए जाएंगे यहाँ पे, और बाद में इसको कंडेंस करके निकाल दिया जाएगा और आपको प्रोडक्ट ड्राई में मिलेगा। दिस वाज अगर ऑल अबाउट द ड्राइंग। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन मीन्स व्हाट? Technical definition of evaporation is removal of solvent from solution by boiling the liquid. तो ड्राइंग में क्या होता है कि ड्राइंग में रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड, दैट इज नोन एज अ ड्राइंग। सो इवेपोरेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर इन अ लार्ज क्वांटिटी, ओके, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम मदर लिकर, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन इन अ suitable vessel by in a suitable vessel and withdrawing the vapors, leaving the concentrated liquid residue in the vessel, that is nothing but evaporation. So evaporation is the removal of solvent from solution by boiling the liquor in suitable vessel and withdrawing the vapors and leaving the concentrated liquid residue. तो ड्राइंग में वट एवर ड्राइंग में आपको प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो सॉलिड मिल रहा है, इवेपोरेशन में जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको वो कॉन्सेंट्रेटेड स्लरी और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मिल रहा है। ड्राइंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ड्राइंग में क्या होता है कि उसमें जो मॉइस्चर जो है आपके कंपाउंड में वो कम रहता है और रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज ओनली देयर, दैट ऑकर्स इन ड्राइंग। बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन, here relatively large amount of water is to be removed. Evaporation में क्या होता है, large amount of water remove करना है। In case of drying, only small amount of water or small amount of solvent is involved. So solvent recovery is not important. ड्राइंग में क्या है, आप रिमूव करना है, आपको उसका रिकवर नहीं करना है क्योंकि उसमें क्वांटिटी वैसे भी कम है, ठीक है। बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन यहाँ पे सॉल्वेंट का क्वांटिटी या फिर वाटर का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। सो वाटर अगर है तो वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दूसरा सॉल्वेंट है तो उसका रिकवरी करना जरूरी है। सो recovery of solvent is important in case of evaporation, but it is not important in case of drying. That is the basic difference. So in case of drying you are getting solid powder, in case of liquid evaporation you are getting concentrated solution or slurry. Now factors affecting on the evaporation. The rate of evaporation is given by m is equal to ks divided by b minus b dash. तो इसमें m क्या है, mass of vapor formed per unit time. Then S is the surface area of liquid exposed atmospheric pressure. P is nothing but the atmospheric pressure. B is nothing but the maximum vapor pressure and temperature at a temperature. And B dash is nothing but the pressure due to liquid present. K is nothing but the constant. ये है rate of evaporation is given by one equation. इतना याद मत रखो, सिर्फ इतना रखो कि factors affecting on evaporation, rate of evaporation. As there will be high rate of evaporation, तो evaporation will be faster. तो इसमें मास ट्रांसफर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो मोर विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ इवेपोरेटिंग लिक्विड, मोर विल बी द इवेपोरेशन, है ना। जैसे होता है, जैसे अमोनिया, अमोनिया का लिक्विड अमोनिया है तो ऑलरेडी उसका वेपर प्रेशर इतना होता है कि उसको हीट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो वोलेटाइल होता है। सो वोलेटाइल मतलब क्या है, उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वोलेटाइल सब्सटेंस का जो है ना उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो दैट्स व्हाई दे आर दे आर कन्वर्टेड इनटू वेपर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो वोलेटाइल सब्सटेंस अगर हाथ में भी रख दिया तो वो उड़ जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, मतलब उसका वेपर प्रेशर ही इतना होता है। वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द equilibrium pressure exerted by the molecule on the atmosphere, that is the vapor pressure. So vapor pressure is directly proportional to the evaporation. Next one is the surface area. Again, more will be the surface area of dry evaporating surface, so more will be the evaporation, directly proportional. The rate of evaporation can be increased by increasing the surface evaporating surface area. Rate of evaporation can be increased by increasing the vapor pressure. Rate of evaporation can be increased by increasing the temperature. Okay, so temperature, vapor pressure, and surface area, they are directly evaporation.
moisture content of feed. Now it is inversely increase in the temperature slowly to prevent the idleness of it. जितना ज़्यादा moisture होगा उतना rate of evaporation क्या होगा, कम होगा. ज़्यादा moisture जितना, so moisture content of the feed, तो to increase जो वहाँ पे जो temperature slowly increase करना है to prevent the duct degradation address को करना है वो इसलिए slowly evaporate करना है. Film deposit and product की जो होता है जैसे film deposit on the surface of evaporator is the evaporation rate को जो जैसे आपने इनिशियली evaporate कर दिया तो नीचे आपको एक thin film होता है तो वो उसका thickness जितना ज़्यादा होगा उतना rate of evaporation कम होगा. तो rate of evaporation is inversely proportional to the thickness of film and deposit of the product on the evaporator surface. Next one is a classification of evaporators. Type of evaporator and example. Different type of evaporator. Evaporator with heating medium in a jacket. मतलब ये क्या, जैसे steam jacketed केटली evaporating pan होता है तो उसमें क्या है कि evaporator with heating medium in a jacket. Heating medium में उसमें आप गैस पास कर सकते हो या फिर हॉट लिक्विड पास कर सकते हो. सो एग्जांपल उसका है स्टीम जैकेट केटली और evaporating pan. और सेकंड क्लास ऑफ evaporator, वेपर हीटेड evaporator with the tubular heating surface. इसमें क्या रहेगा, ट्यूब्स रहेंगे, ट्यूब्स. वेपर हीटेड evaporator with tubular heating surface. तो वर्टिकल with vertical tubes and with the vertical tubes क्या है, एग्जांपल सिंगल इफेक्ट शॉर्ट ट्यूब evaporator, शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल evaporator with सिंगल इफेक्ट with मल्टीपल इफेक्ट evaporator. तो इसमें ये evaporator में क्या होगा, ये लॉन्ग ट्यूब्स होंगे. इसमें आप स्टीम then evaporator with long tube evaporator. So with natural circulation and with forced circulation. Natural circulation मतलब density प्लस की वजह से होता है और forced circulation मतलब यहाँ पे pumps यूज करते हैं. So climbing film evaporator, falling film evaporator, forced circulation evaporator. These are the type of long tube evaporator. कभी-कभी इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर कभी-कभी क्वेश्चन आता है. So identify a long tube evaporator. इसमें से एक एग्जांपल है क्लाइंबिंग फिल्म evaporator. ठीक है, मल्टीपल इफेक्ट evaporator is example of ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेंगे. जैसे evaporation chapter is not much important. Now evaporator principle and its use. So list of evaporator is in column number, उसका principle क्या है और उसका use क्या है. So horizontal tube evaporator एक होता है आपका, उसमें the principle of evaporation is natural circulation and it is used for non-viscous and non-crystallizing liquid and non-scale forming. इसका deposit नहीं होगा उसी के लिए horizontal tube evaporator. ठीक है, scale formation या फिर deposit होगा तो rate of evaporation will be decreased. That is a horizontal tube evaporator. A vertical tube evaporator, it is also known as a Calibadria type of evaporator. Calibadria. So again, the principle of evaporation is natural circulation and it is used in the sugar industry for concentrate and also used for to concentrate this cascade extract and also used for the those liquid which are generating foamy type of liquid जो होता है उसके लिए vertical tube evaporator basket type का, उसमें अगर again natural circulation होता है for sugar, salt, heavy chemicals. Climbing film evaporator, natural circulation used for insulin, vitamin, blood, plasma, liver extract. ये याद रखो थोड़ा सा. So climbing film evaporator is used for the evaporation of slurry of insulin, vitamin, blood plasma and liver extract and thermal and foamy material. Then next one is a falling film evaporator. Again natural circulation is the mechanism used for viscous liquid when high percentage of evaporation is required. So this was the evaporation. उसमें एक थोड़ा सा और important point है, steam jacketed kettle. Steam jacketed kettle is also known as evaporating pan. Vertical tube evaporator is also known as short tube. Climbing film evaporator is known as rising film evaporator. ये climbing film evaporator is used in the thermal polar insulin, liver extract. Vertical tube evaporator is concerned with the series. Vertical tube evaporator when connected in the series is known as a multiple tube evaporator. Product of one will become paid for. मतलब यहाँ पे क्या है, वर्टिकल ट्यूब evaporator एक है तो उसमें कनेक्शन में सीरीज में ज्वाइन करेंगे 1 2 3 4 5. पहले का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए फिट बन जाएगा, दूसरे का जो प्रोडक्ट है वो तीसरे के लिए फिट बन जाएगा, तो मल्टीपल इफेक्ट मिल जाएंगे. ओके, सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर. टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 chapters.
हीट ट्रांसफर, ड्राइंग एंड इवापोरेशन, 3 चैप्टर। सो इवापोरेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसमें से अगर आ भी गया बाय चांस तो एक क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ इवापोरेटर के ऊपर। ड्राइंग इज इम्पोर्टेंट, ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एक या दो, तो 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके ऊपर। ये यूरोपियन गाइडलाइंस याद रखो, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर्स याद रखो। फ्रीज ड्राइंग के बारे में क्वेश्चन 100% आता है आपको, स्प्रे ड्राइंग के भी बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रीज ड्राइंग में प्री ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीज ड्राइंग, इसमें इनिशियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्राइमरी ड्राइंग क्या होता है, सेकेंडरी ड्राइंग क्या होता है, ये सब इम्पोर्टेंट। ड्रायर, ये सब इम्पोर्टेंट। स्प्रे ड्राइंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और ये सब मतलब थ्योरी एंड डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ड्यू पॉइंट क्या होता है, वेट बल्ब, ट्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये साइकोमेट्रिक चार्ज जो होते हैं इस तरीके से होते हैं, मतलब दे विल गिव यू रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड, अपन ने ये देखा था हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म, ठीक है, हीट ट्रांसफर के मैकेनिज्म कितने होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। लॉज, कौन सा लॉज किसका है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये देखा था thermal conductivities of metals, वो एक important। So this was our today's lecture। So pharmaceutical engineering में से आपके कितने चैप्टर्स हो चुके हैं, आपका साइज रिडक्शन हो चुका है, साइज सेपरेशन हो चुका है, आपका ड्राइंग हो चुका है, इवेपोरेशन हो चुका है, हीट ट्रांसफर हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम अपन लेंगे डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन लेंगे नेक्स्ट टाइम।